kind of appreciation, inspired, enlightening words, invigorating words, these grand teachings. And now in the Raja Yoga, we are discussing about the Patanjali Yoga Sutras, Ashtanga Yoga, and especially its last steps, dhyana and samadhi. So taking that same thing forward, we try to understand what he's saying. He says that the best thing for this world would be to make hay while the sun shines, each man for himself. If there is no hope, we should why I should love my brother, why I should not cut his throat. So morality or ethics also requires justification for a person like a being like a human being, since he and she is a rational being. So we need to actually make him or her understand that why it is necessary that you should have this particular code of conduct or ethics or morality. You'll find people saying nowadays that they have utilitarian grounds as the basis of morality. What is this basis? Swamiji asks, procuring the greatest amount of happiness to the greatest number. Why should I do that? Why should I not produce the greatest unhappiness to the greatest number? If that serves my purpose, अगर उससे मेरा लाभ हो रहा है तो मैंने क्यों सबके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। ये जो आज का उपयुक्ततावादी तत्वज्ञान भी जिसकी जोड़ करता है वो मैं क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों न करूं जिससे अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक उनको तकलीफ हो, दे विल हैव पेन्स बिकॉज ऑफ मी, ऐसा क्यों न करूं। ये अगर सवाल कोई पूछता है, कल हमारे बच्चे भी पूछते हैं, हमारे विद्यार्थी पूछते हैं, तो शिक्षक की हैसियत से एक गुरु के पीठ से आपको एक तर्क शुद्ध उसकी मीमांसा या उसका उत्तर अपेक्षित होता है। ऐसा उत्तर नहीं होना है कि just because I am saying you should believe it, or just because this book has said it, so you should. Even just because Swami Vivekananda has said it, you should believe it. That also is not the right, because even Swamiji himself will not like that type of following without actually getting convinced about it or getting an understanding of it. So that's very important. So if I really go into the depth of this whole thing, I realize that there is a sense in what these ethical dictums are telling. What is it? मुझे अभी तो I know nothing beyond my perception in waking state. I know about my desires. I know that I should fulfill them. So why I should have any complaints about it, or why I should not complete or fulfill my all the desires? But when you start understanding about the immortality of the soul, when you start understanding of the deeper meanings of life, God, love, and sympathy, and why being good and being unselfish is ultimately more rewarding for even your own happiness and your survival, then these questions will not come. Swami says all ethics, all human actions, and all human thought hang upon this one idea of unselfishness. बहुत सुंदर है कि सारा विश्व का जो नीति नियम है, मनुष्य विचार का जो भी एक प्रकार का नीति का अनीति का जो भी कक्षा है उसका टच स्टोन, उसकी टेस्ट कहाँ होती है, तो आप कितने निस्वार्थ है उसमें होती है, हाउ मच अनसेल्फिश यू आर. The whole idea of human life can be put into this one word, and that is unselfishness. Why should I be unselfish? Why should we be unselfish? Where is the necessity, the force, the power of my being unselfish? We call yourself a rational man, a utilitarian. But if you do not show me a reason for utility, I say you're irrational. Show me the reason why I should not be selfish. तो आप मुझे रीजन बताओ कि मुझे निस्वार्थ क्यों होना है. मुझे आप मेरी बुद्धि को जो अच्छा समझ में आए इस प्रकार से उसका कुछ तर्क दे दो, मुझे कारण दे दो. ऐसे आज का कोई भी व्यक्ति पूछेगा जो इस घड़ी का, इस एज का जो रिप्रेजेंटेटिव है, विज्ञान युग का, जो वो ऐसे पूछ सकता है. एंड दैट्स व्हाई we should have the answer is that the world is only one drop in the infinite ocean, and one link in this entire infinite ocean you are, infinite chain you are. So where did they when you say unselfishness, actually you are trying to just expand your consciousness. You are trying to understand that you are not
this small drop, but a part of the ocean. You're not just this small leak, but a part of this entire chain. And therefore, doing good to others or do not always think of my this small I only means that my expanding myself to that big I or the right ego, kachami to pakami. We are trying to understand this, and that's why it is more, you can say, advantageous. It's going to give you more utility. It's going to give you more happiness because that's the truth. So if when you understand this, when the human race is taught this, and then we should know that it is not instinctive. We are not like animals which go by the instinct. They don't know all these things. They don't have reason. But once you have the reason, then you should start asking this. You should find out the answers for it. And in that process, when somebody who has realized and who is unselfish is telling you something, then you should also follow what he said through his experience or her experience and her dictums, because they are telling you with unselfishness, not for their own uh, interests. They are talking about all these things. We find in studying the history one fact held in common by all the great teachers of the religion the world ever had. They all claim to have got their truths from beyond. Only many of them did not know where they got it from. For instance, somebody may say angel came down in the form of human being with wings, and some say that here, oh man, this is my message. Another says that there was a deva, there was a bright being who appeared in front of them. But in all over world, सब पूरी दुनिया में ये एक समान चीज है कि सारे जो ऐसे दृष्टा या प्रेषित या संत महात्मा थे, उन सभी ने ही कहा कि मुझे ये सत्य कहीं ऊपरी जगत से मुझे मिला है, देवदूतों से मिला है या किसी अवतार से मिला, ये अलग बात है, लेकिन मुझे एक मेरे चेतना से ऊसर के बियॉन्ड, उसके भी परे जाने वाले एक जगत से मुझे मिला है, ये व्यक्तियों से मिला है, इतना सबका एक समान धागा है। कुछ कुछ कहते हैं मुझे सपने में आ गया, we dreamed it about, we did not know anything about it, but it's a common thing that it has come from some other level, some beyond, some, and not through the reasoning power. This is a common thing, not through my intellect and my reasoning, but something beyond. There is a place, there is a level, there is a loka, and then from that it has come. So what does this science of yoga teach us? हमें योगा का जो विज्ञान है वो यहाँ क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि आप भी उस प्रकार का अनुभव ले सकते हैं। अगर देवों को मिला है, देवदूतों को मिला है, प्रेषितों को मिला है, संतों को मिला है, तो आपको भी ये आपकी साधना से आप कई बाकी सारे धर्मों में इसको ब्लास्फेमी कहा जाएगा, इसको एक प्रकार से धर्म के विरुद्ध माना जाएगा, भगवान की सर्वश्रेष्ठत्व को ये एक प्रकार की चुनौती माना जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं कहा जाता है। भारत में कहा जाता है कि ये साइंस है, ये साइंस ऑफ योगा है, और इसलिए टीचर्स दैट दे आर वेर राइट इन क्लेमिंग दैट ऑल दिस नॉलेज केम फ्रॉम द बियॉन्ड रीजनिंग, बट दैट इट केम फ्रॉम विद इन देमसेल्व्स। ये भी उसका दूसरा भाग है, क्या उनको लगा ये किसी उच्च स्तर से आया, लेकिन उनके भीतर भी वो स्तर था। There is something inside them also which was actually helping this entire progress, and that's why that inside is inside you also. It is not it is unmanifested now, अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन उनके अंदर जो था वही जो साइकिक बीइंग या वही जोत आपके अंदर भी है। आप भी उसको एक प्रकार से दिशा दे सकते हैं, उसको इंटेंस कर सकते हैं, प्रखर कर सकते हैं, और उसी प्रकार आप भी अनुभव धीरे धीरे आपको ये जन्म में तो अगले जन्म में साधन जब तक आप करेगा आपकी प्रगति होती है। So this is what yoga teaches us, that mind itself has a higher state of existence beyond reason, a supraconscious state, and when the mind gets to that higher state, then this knowledge beyond reasoning comes to man. So metaphysical and transcendental knowledge comes to that man. This state of going beyond reason, transcending ordinary human nature, may sometimes, by chance to a man, may happen to that. He may stumble on spirituality, Swamiji says, but he may not understand the science of it. So some of the religions or faiths have such beginnings where it came by stumbling, but some others like Sanatana dharma, it has been understood through the science of it. So there the difference comes, there the detailing comes, there the processes come which the others may not have. And therefore, when he stumbles on it, yes, that prophet is also great. He has also started a new thing. We don't want to criticize that way. But ultimately, he explains whatever he interprets from that. And he explains, and those words become ultimately the final words. And nobody tries to cross them because he himself is not aware, probably, or not able to articulate the process of it, nor able to tell the
unselfishly, that it's not belonging to me, it has come from something else, which is a process in the science. And therefore, the listeners also try to follow it as a blind faith, and that goes ahead as a faith, but ultimately it does not turn into a science like the yoga. So Swamiji says, but in one country it will seem to come through an angel, other through whatever it may be, but it ultimately knows that it has come through a means, through all these things. योगा में क्या फर्क है कि उन्हें पता है कि इस प्रकार से स्टम्बलिंग होना, किसी गलती से आपको सत्य के ऊपर आपको ठेस लग के सत्य मिलना और सत्य को हाथ में लेकर उसको संभालना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। और इसलिए ये दोनों का जो आपको आगे जाने की अवस्था में भी, एक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दूसरे में अवैज्ञानिक है, ये समझ लेना। So Yogi says there is a great danger in stumbling in this thing. A good many cases there is a danger of the brain also, because the brain being deranged, and as a rule, you will find that all those men, however great they may be, who have stumbled upon the superconscious state without understanding it, groped in the dark, generally had, along with their knowledge, some quaint superstition. They opened themselves to hallucinations. Muhammad claimed that the angel Gabriel came to him in a cave one day and took him on the heavenly horse Harak and visited the heavens. But with all that, Muhammad spoke some wonderful truths. सो ऐसे होने से हमेशा उनके साथ कहीं ना कहीं अवैज्ञानिकता या कोई सुपरस्टिशंस, अंधश्रद्धाएं या अंधविश्वास आते ही रहते हैं, उनके कुछ भ्रम भी उनके साथ जुड़े जाते हैं। लेकिन उनके साथ, उसके बावजूद भी उनके पास कोई अच्छी बहुत बड़े तथ्य होते हैं, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। तो इसलिए उसके बारे में भी कई बातें उन्होंने कही है। दोज men are inspired, that man was inspired, no doubt, but that inspiration was as it was stumbled upon. He was not a trained। बहुत ही साहस से स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि आज की अवस्था में भी इस प्रकार से किसी धर्म पर टिप्पणी करने के लिए बहुत साहस चाहिए। ये स्वामी जी के पास एक निस्वार्थता थी, प्रखरता थी, बुद्धि का वैभव था। उन्हें पता था पूरे विश्व के कल्याण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ना किसी के स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, ना किसी छोटे से दायरे के लिए बड़ा करने के लिए कर रहा हूँ, ना मेरे धर्म के लिए कर रहा हूँ, मैं तो पूरे विश्व जगत के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए, बस इतनी बात है। कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ का यहाँ भाव नहीं। तो इसलिए मोहम्मद ने किया, वो भी महानता थी, उसका धर्म भी अपने आप में बहुत महान इतिहास की घटना है। लेकिन फर्क ये था कि प्रोसेस को समझना न समझना, देयर इज क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। एंड दैट्स व्हाई यू फाइंड दैट आफ्टर ऑल सच रिलीजन्स देयर वाज jihad, there was crusades, and there was a blood bedding of the entire earth. Millions were massacred because of this fanaticism. His teachings, through his teachings, mothers bereft of their children, children made orphans, whole countries were destroyed, millions upon millions were killed. Why? Because the process was accidental. It was not completely taken in its totality. With a lot of good ideas, there were also some superstitious ideas mixed in, which as a yogi, we need to avoid as a possibility of danger for each one of us. To get any reason out of the man's mass of incongruity we call human life, we have to transcend our reason, but we must do it scientifically. यही यहाँ पर ये फर्क होता है कि हमें ट्रांसेंड तो करना है, हमें लांग कर सीमा तो जाना है, but that also should be done scientifically. सो तर्क के माध्यम से ही तर्क को लांघा जा सकता है। यू कैन गो बियॉन्ड द इंटेलेक्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्ट, नॉट बाय सुपरस्टिशंस। Slowly, by regular practice, we must cast off all the superstitions. We must take up study of superconscious state, just as any other science. जैसे बाकी भौतिक विद्या है, वो शास्त्र है, वैसा ये भी एक शास्त्र है। उसका भी वैसे ही प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं, तटस्थता से उसके आप देख सकते हैं नीति नियमों को उसकी। On reason, we must have to lay our foundation. We must follow reason as far as it leads, and when reason fails, reason itself will show us the way to the highest way. बहुत सुंदर महत्वपूर्ण काम है ये। From the springboards of mind only the next leap can be taken. शेरविंदो कहते हैं, यही वे वाक्य है कि we have to transcend reason through the reason only. Must follow reason as far as it leads, and when reason fails, reason itself will show us the way, the highest plane. When we hear a man say, "I'm inspired," and then talk irrationally, just reject that. No matter how great he may be, how big he may be considered as a guru, you are not going to follow that advice, because he is not taking to you through the rational way beyond the reason. That's why it cannot be followed. There are three states: instinct, reason, and superconsciousness. अभी हमें पता चला है। All the unconsciousness, consciousness, and superconsciousness belong to one, and they all are belong to the same mind, one mind only.
So there are, as if there are three minds in the human being, but one state of it develops into the others, and therefore not one of the states contradicts to the others. किसी का किसी से ये संवाद नहीं है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक ही से दूसरी की प्रगति हो रही है। तो ये सारी अवस्थाएं, सारे मन हमारे भीतर ही है, ऐसा हम मान सकते हो। तो जिसका जो रियल इंस्पिरेशन है वो कभी भी इट्स नेवर कॉन्ट्राडिक्ट्स रीजन। बहुत सुंदर ये स्वामी जी का एक वाक्य, अनेक वाक्यों से, बट फुलफिल्स इट। द रियल इंस्पिरेशन नेवर कॉन्ट्राडिक्ट्स रीजन बट फुलफिल्स इट। जो सही प्रज्ञा है, या जो सही हमारे ऊपर एक प्रकार की हम किसी बुद्धिलता जैसा हमें नया इंस्पायरिंग, या हमें क्या कह सकते हैं उसको, हमें प्रेरणा देने वाले ऐसी जो चीजें होती है, वो कभी भी बुद्धि को विसंगत नहीं होती है, विपर्यास उसका नहीं करती है, बल्कि बुद्धि का ही अगला आविष्कार होती है, उसको और परिपूर्ण करती है। इट फुलफिल्स इट। Just as you find the great prophet saying, I come not to destroy but to build, to fulfill. So inspiration always comes to fulfill reason, and it is in harmony with it. बहुत महत्वपूर्ण बात है। All the different steps in yoga are intended to bring up scientifically to the superconscious state or samadhi. Furthermore, this is the most vital point to understand, that inspiration is as much in every man's nature as it was in that of the ancient prophets. हर एक में वो प्रेरणा हो सकती है, वो हायर माइंड हो सकता है, और जो भी हमारे पास योग के माध्यम से आया है वो वैज्ञानिक रूप से आता है, वही हमें सुपर कॉन्शियस या अतिमानस या अति चेतन अवस्था में लेके जाने को सक्षम है, और वही हमें समाधि अवस्था तक लेके जा सकता है। These prophets were not unique, they were men as you and I, they were great yogis. They had gained this super consciousness, and you and I can also get that. अगर उनको मिला है तो हमें भी मिल सकता है। They were not peculiar people. The very fact that one man ever reached that state proves that it is possible for every man to do so. इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इतना सनातन धर्म की ये महानता है कि ये उपलब्धि, ये स्वातंत्र, ये पॉसिबिलिटी हर व्यक्ति को दी है कि आप नर करनी करें तो नर का नारायण हो जाए। Experience is the only teacher we have. We may talk and reason all our lives, but we shall not understand a word of truth until we experience it. We cannot hope to make a man a surgeon by simply giving him few books. We cannot satisfy my curiosity to see a country by showing me a map. I have to have a real experience. मुझे अगर किसी देशों देश का, अनेक राष्ट्रों का अनुभव लेना है तो मुझे प्रवास करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसके बारे में उसका नक्शा देख के मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे अगर किसी चीज के बारे में मैं वैद्यक शास्त्र में हूँ और मुझे किसी व्यक्ति का अगर मुझे शल्य करना, चिकित्सा करनी है, मुझे सर्जरी करनी है, तो मुझे खुद वो करनी पड़ेगी। उसके पुस्तक पढ़कर मुझे वो नहीं समझेगा। तो अनुभव ही सबसे बड़ा हम कह सकते प्रमाण है, और उससे हमें पता चलता है कि कहाँ तक हमें इसे सच्चाई उसको समझ सकते हैं। हमें अनुभव से Maps are useful because they can create curiosity in us to get more knowledge. Books are useful because they can create curiosity in you, but beyond that, don't think that they have got any value. Clinging to the books or clinging to the maps can degenerate the human mind, you know. पुस्तक को ही पकड़ के बैठे, पुस्तक लिखने वाले ने जो विचार किया था उस विचार को पकड़ लिए, विचार के पीछे जो उसकी प्रेरणा थी, उसका मन के जो आविष्कार था, उसका अचेतन से अर्धचेतन, अर्धचेतन से चेतन, चेतन से अति चेतन का प्रवास था, उसको आप देखिए। वो अपने भी शक्यता है, उसको आप खुद अपने अनुभव से देख लीजिए। वो आप चंद्र को देखिए, चंद्र की तरफ दिखाने वाली उंगली को मत देखिए, ऐसा जो हम लोग कहते हैं उसका ये अर्थ है। Don't look at the finger which is pointing to the moon, look at the moon which I am pointing to. So ये वो सत्य है, सत्य धर्म है, उसको हमें देखना है। So was there ever a more horrible blasphemy than the statement that all the knowledge of God is confined only this book or that book? इससे बड़ी ईश्वर की भी निंदा क्या हो सकती है कि कोई कहता है सिर्फ इसी पुस्तक में या उसी पुस्तक में भगवान का सारा दिया हुआ ज्ञान है, बाकी किसी में नहीं है। एक्चुअली ये सबसे बड़ी ब्लास्फेमी या निंदा या धर्म विरुद्ध हम कह सकते कृति या वक्तव्य कहा कहना पड़ेगा कि ईश्वर की जो ओमनीपोटेंस, ओमनीशियंस, ओमनीप्रेजेंस, उसका जो सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सर्वज्ञानिता उसकी है, उसको आप बहुत ही छोटा समझ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसी पुस्तक में सब कुछ है, बाकी किसी में नहीं है।
Millions of people have been killed because of that, because they did not believe in a particular book, because they would not see all the knowledge of God within that covers of the book. Of course, this killing and murdering has gone by. अभी थोड़ा सा पीछे पड़ गया ऐसा स्वामी जी को लगा, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, काफी चल रहा है. But the world is still tremendously bound up in the belief of the books. यही उसका कठिनाई है. In order to reach the superconscious state in scientific manner, it is necessary to pass through the various steps of Raja Yoga. I have been teaching, Swamiji कहते हैं, after pratyahara and dharana, we come to the dhyana or meditation. When the mind has been trained to remain fixed on a certain internal or external location, there comes to it the power of flowing in an unbroken current. इसलिए साइंटिफिकली आपको प्रत्याहार किया आसन प्राणायाम के बाद में, और उसके बाद अभी हमने धारणा के बारे में सुना, तो अभी ध्यान का और मेडिटेशन के बारे में स्वामी जी बता रहे हैं. अनब्रोकन कंटिन्यूटी, जैसी तेल की एक धार गिरती है, वैसे एक बार आपकी धारणा में अच्छा आपका साधन हो गया तो बिल्कुल एक ही चीज पर बिना रुके बिना ठहरे एक प्रवाहित रूप से आ जाना, इसी को हम लोग ध्यान कह सकते हैं. अनब्रोकन करंट फ्लोइंग, पावर ऑफ द फ्लोइंग इन अनब्रोकन करंट. तो ये पावर ऑफ ध्यान है. As to be able to reject the external part of perceptions and remain meditating only on the internal part, the meaning, that state is called as samadhi. The three dharana, dhyana and samadhi together are called as the संयम. किसी चीज का आप संयम करते मतलब क्या करते हैं, तो उसके ऊपर आपका पूरी तरह से यू कैन से धारणा है, ध्यान है और फिर समाधि भी है. That is, if the mind can first concentrate upon an object and then is able to continue to that concentration for a length of time, and then by continued concentration to dwell only on the internal part of the perception of which the object was the effect, everything comes under the control of such a mind. सब कुछ उनके कंट्रोल में आ सकता है अगर आपने एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाया और फिर वही ध्यान को आप कंटिन्यू कर पाए लंबे अरसे तक, लंबे समय तक, और वैसे कंटिन्यूस कंसंट्रेशन की वजह से उसका इंटरनल पार्ट ऑफ परसेप्शन है, उसी को अगर आपने देखा, जिसका वो पदार्थ केवल एक बाह्य रूप था, उसके मतलब पदार्थ के भी अंदर जो उसका तत्व है उसको अगर आप समझ सके तो फिर आप ये अवस्था आगे. This meditative state is highest state of existence. So long as there is desire, no real happiness can come. It is only the contemplative witness-like study of object that brings to us real enjoyment and contemplation. तो जब तक आप यही मेडिटेटिव या ध्यान की अवस्था ही सबसे उच्च अवस्था है हमारी, और जब तक हमारे मन में कोई भी इच्छा या वासना है, अतृप्तता है, तब तक कभी भी हमें सच्चा, हम कह सकते थे, संतोष नहीं मिलता है, हमें समाधान नहीं हमारा होता है. और इसलिए ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम लोग उसका ही अंगीकार करें, उसी के पीछे हम लोग अपनी पूरी शक्ति लगा दें और उसी मार्ग पर हम लोग चलते रहे. ये बहुत आवश्यकता है. इट इज नॉट ओनली टू द सोल दैट हैज अटेन्ड टू द contemplative state that the world really becomes beautiful. To him who desires nothing and does not mix himself up with them, the manifold changes of nature are one panorama of beauty and sublimity. जो अपने आप को इस प्रकार से दृष्टा के रूप में अलग रूप से देख सकता है, उसके लिए सारा विश्व एक चित्रपट है, और वो एक अपने अलग अलग अंदाज में अपने अपने परिवर्तनों में जा रहा है. अपनी हर इसमें कुछ सुंदरता है, हर इसमें कुछ तथ्य है, हर इसमें कुछ बहुत ही गहराई है, ये वो समझ सकता है. ब्यूटी एंड सब्लिमिटी, पैनोरामा ऑफ ब्यूटी एंड सब्लिमिटी. तो ये सारी these ideas have to be understood in ध्यान or meditation. We hear a sound first, there is an external vibration. Second, the nerve motion that carries it to the mind. Third, the reaction from the mind, along with which the flashes knowledge of the object, which was the external cause of these different changes from the eternal vibration, the mental reactions. ये उसकी अलग अलग अवस्था है, बाह्य से अंतर और अंतर से फिर बाह्य. These three are called in yoga as the shabd, sound, artha, meaning and jnana. तो ये तीन उसकी भाग है. In the language of physics and physiology, they are called ethereal vibration, the motion of the nerve, motion in the nerve and brain. तो शब्द, अर्थ, ज्ञान, sound, meaning, knowledge, या ethereal vibration, motion in the nerve and brain, ये सब उसकी तीन भागों में उसको बांटा गया है. And the mental reaction. So these two distinct processes have become mixed up in such a fashion that so as to become quite indistinct. In fact, we cannot now perceive any of these.
you will be perceiving their combined effect, what we call the external object. हमें ये सबका अलग अलग पृथक समझ भी नहीं आता है हमारे नॉर्मल चेतन की अवस्था में, और हमें ऐसा लगता है सिर्फ एक वस्तु है बाहर, वो हमें दिख रही है। लेकिन एवरी एक्ट ऑफ परसेप्शन इंक्लूड्स ऑल दिस थ्री, the sound and the meaning and the knowledge, they all are included in that particular perception of any object. There is no reason why we should not be able to distinguish them. And therefore, by abhyasa, by continuous practice, we should be able to do that. When by the previous preparation it becomes strong and controlled, and as the power of final perception, the mind should be employed in meditation. जब अभ्यास से हमारे प्रीवियस प्रिपरेशन से एक प्रकार से हमें वो दृढ़ता, स्ट्रांगनेस आ गया है, एकाग्रता आ गई है, कंट्रोल आ गया है, तो फिर हमें ये फाइनल उसके जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो संवेदना हमें होनी चाहिए, आकलन होना चाहिए, और फिर वो मन है जो ध्यान में लग सकता है. Meditation must begin with gross objects, slowly rise to the finer and finer until it becomes objectless. Mind should first be employed in perceiving the external causes of sensation, then to the internal motions, and then finally, then its own reaction to that. ये सब उसकी अवस्था है. When it has succeeded in perceiving the external causes of sensations by themselves, the mind will acquire the power of perceiving all fine material existence, all fine bodies and forms. When it can succeed in perceiving the motions inside by themselves, it will gain the control of all mental waves in itself or in others, even before they have translated themselves into physical energy. And when he will be able to perceive the mental reaction by itself, you will acquire the knowledge of everything, as every sensible object and every thought is a result of this reaction. एक एक अवस्था में जैसे उसकी उन्नति हो रही है, स्वामी जी बता रहे हैं कि उसको जब एक एक ये ऊपर उसके स्तर में वो जाता है, तब क्या क्या उसके परिणाम होते हैं. जब उसको ये मोशन समझ में आते हैं, नर्व्स मोशन, तब उसको सारे अपने मेंटल वेव्स पे कंट्रोल आ जाता है, और जब वो उसको फिजिकल एनर्जी में वो ट्रांसलेट कर पाता है, उसके भी अगर आगे चला जाए तो सबका ज्ञान भी हो जाता है. इस प्रकार की तीन अवस्थाओं का वर्णन सामने इसमें and then will he have seen the very foundation of his mind? Will be under his perfect control. Different powers will come to the yogi, and if he yields to the temptations of any one of these, the road of his further progress will be hard. किसी भी temptation या किसी भी पिछले के रास्ते में जो भी ऐसे लाभ मिल रहे या स्टेशंस आ रहे, उसमें अगर वो अटक गया, उसमें वो फंस गया, तो आगे का मार्ग पूरा अवरुद्ध हो जाता है. Such is the evil of running after enjoyment. जब आप छोटे छोटे आनंद के बीच में अगर आप घुस जाते हैं, उसमें ही आप लिप्त हो जाते हैं, उसमें ही आप अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, तो आपका मार्ग इस प्रकार से रुक जाता है. ये बहुत बड़ा धोखा है. Until then we only struggle towards that stage. There is no difference now between us and those who have no religion, because we have no experience. What is concentration good for? Save to bring us to that experience. अभी जब तक हम स्वानुभव से इसका सबका प्रयोग नहीं कर रहे और प्रगति नहीं कर रहे, तब तक हमें और बाकी लोग जो धर्म मानते नहीं है, किसी भी आध्यात्मिक प्रेरणा को मानते, उनमें और हमें ज्यादा फर्क नहीं है. सिर्फ वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे और हम लोग पर्याप्त नहीं कर रहे, आवश्यक जितना है उतना नहीं कर रहे. So both are in the same level. That's why it's very important that we should come out of those shackles and start progressing. If we say that we believe in religion and God and spirituality, it should reflect in our action and our daily practices and our clinging to that particular methodology and processes as are given, and following all those things, and not falling prey to the small enjoyments and the distractions. Otherwise, what is use of that concentration? अपने एकाग्रता का सारा अनुभव किया, उसका फायदा क्या है अगर वो ये अनुभव तक आपको लेके नहीं आती? And each one of these steps to attain the samadhi has been reasoned out, properly adjusted, scientifically organized, and when faithfully practiced, will surely lead us to the desired end. बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सब चीजें बनाई गई है, इसलिए आपको उस तक को लेके जाने में वो बिल्कुल ही सहायक हो जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये अनुभव की बात है. Then will all sorrows cease, all miseries vanish, the seeds for action will be burned, and the soul will be free forever. ऐसा अनुभव आपको आ सकता है कि सारे कर्म बीज आपके जो है वो दग्ध हो गए, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, सारे दुखों का विनाश हो गया है, और सारे कुछ है ही नहीं, विलाप करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ दुख है ही नहीं, कर्मों का भी पूरा बीज से नाश हो गया है,
और मुक्त आत्मा जो है फिर एक बार अपनी मुक्ति के अग्रसर हो गया है, इस प्रकार का आपको ये सारा भाग दिखता है। तो ये आपका हम देखेंगे कि राजयोगा का समाज व्यवस्था तक को इस प्रकार से हमको लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो सेशन है उसको रोकते हैं। अगले सेशन में राजयोग का एक सारांश स्वामी जी दे रहे हैं, शुरू से एक छोटे से कह सकते हैं एक समरी ऑफ द होल थिंग इन नटशेल इस